what is the activation energy basically? Activation energy is basically the minimum amount of energy, the smallest amount of energy that is required for the effective collision. Sometimes there is a collision but no product will form. So for the formation of product, effective collision is very important. If there is no effective collision, then no product will form. So for the formation of product, effective collision is very important. So for this effective collision, minimum amount of energy is required. That minimum amount of energy is basically the activation energy of the reaction. The smallest amount, the minimum amount of energy that you provide to the reactants to collide with each other to do effective collision with proper orientation to make a product, that minimum amount of energy is the activation energy. Activation energy is represented as capital E with the sub A, small a, like this. E, capital A and a small a, activation energy. So you want to make a product, for example, you want to make a carbon dioxide. So in a reactant, carbon and oxygen, they collide with each other. The molecules of carbon and the oxygen gas, they collide with each other, then they make a product. So for that collision, for that product formation, their collision must be effective. If the collision is not effective, for example, if the collision is ineffective, they collide but they do not match their energies, then no product will form. In a container, you place reactant A or reactant B, the molecules of a reactant A and a reactant B. They are moving in a container according to their kinetic energy. When you provide some amount of energy, the minimum energy to this reaction, they collide with each other. If that collision is effective, they will convert into product AB product. But if the collision is not effective, for example, this molecule start moving in this direction, they do not collide with each other with proper orientation. So the B is moving towards the left or the right side, and A is moving upward or down, upward and downward side. So in this way, no product will form. If you want to make a product, then you have to provide that minimum amount of energy which make them collide properly. Then they will make a product A, B. Let's see how this works. Okay, look at here in this figure. In a container, there is reactant A, the molecule A and the molecule B. For example, A2, two atoms in reactant A and two atoms in reactant B, B2. They're having a bonding with each other, and here A having a bonding with A. When they collide with each other, they form a activated complex. They reach a transition state. This transition state is formed due to the effective collision. This transition state is formed due to the effective collision. If molecules do not collide effectively, then they do not attain this transition state. For example, if you try to understand this with the help of a graph, here the reactants are exist. R is representing reactant. And that peak is the transition state, TS, the transition state. If the molecules collide with each other, before that, here they collide. Before that, their kinetic energy will decrease. Molecules having some kinetic energy when they are moving randomly.
So their kinetic energy is decreased and their potential energy will increase, because we know that potential energy is basically a energy that is possessed due to the position. So at this peak, the molecules, here are the molecules. When they start moving upward, for example, this is a hill for the reactants. So when reactants start moving from here, moving upward, before colliding, here they will collide. Before colliding, their kinetic energy will decrease and their potential energy will increase. If their kinetic energy will not decrease, if their kinetic energy, the energy due to motion will not decrease, then the product will not form, because they do not attain the possible activation energy to make a product. This is the activation energy. This hill between the reactants, here product will form. This hill between the reactant and the product is basically the activation energy, which is possible due to the decrease in kinetic energy and increase in the potential energy. For example, one molecule is moving upward. Before collision, their kinetic energy will not decrease and their potential energy will not increase. Then that molecule will not collide with the other molecule. They go without reaction. In a container, reactant A and B are present. A and B. They collide with each other, but that collision do not affect their energies. Their kinetic energy will not decrease, their potential energy will not increase. Then they will not make the product. Just collide and fly apart. Do not make a product. But when they collide, at the point of collision, their potential energy increase, the energy that is possessed due to the position, that potential energy increase, and their kinetic energy, the energy by the help of their moving, is decreased. If this is not possible in a reaction, then no product will form. So the minimum amount of energy that is helpful for the increase of the potential energy and decrease of the kinetic energy for the effective collision is not given to the reactants, the activation energy, the minimum amount of energy is not given to the reactants, then product will not form. So in this figure you can see reactant A and a reactant B are present. They collide with each other. This is a transition state. In a transition state, all the atoms are attached with each other. And as we know, in a product, there are different atoms are attached together. So this transition state having a very small time to be exist, this time may be less than nanoseconds. This state quickly change into product. Here you can see one atom of this molecule is attached with the another atom of the molecule B. So in this way they attach with each other. Here you can see this. So product will form. You know this, that there are two types of reactions, exothermic reaction and endothermic reaction. In both these reactions, the activation energy having a use. So see here by graph that how activation energy is involved in endo and exothermic reaction. Before that, see this graph. Here both the reactants are present. A this molecule A2 and B this molecule B2. Molecule of B and the molecule of A. They are moving upward. Due to the movement of upward direction, their kinetic energy will decrease, and due to reach at the height, their potential energy will increase. Before the collision, the point where they are going to collide, before the collision they slow down. Both the molecules, both the atoms, those are going to collide are slow down.
and when they slow down means their kinetic energy is decreased and potential energy is increased. Then they collide with each other. That is basically the activation energy, the minimum amount of energy that help them to collide effectively. So at this peak, the potential energy is decreased and the kinetic energy increase. Sorry, here increase sign. The potential energy will increase and kinetic energy will decrease. Then they collide. The activated complex, the transition state is exist. In a transition state, all the molecules are attached with each other. AA, AB, BB, AB. Here the bonding becomes weaker and the bonding between A and B, the new bonding between A and B will form. In this way, the product AB, the 2 moles, 1 mole for this one and 1 mole for this one, the 2 mole of the product will form. Any confusion to understand this? What is kinetic energy? No, ma'am. Okay, this amount of energy, this difference between the hill, between the reactant and the product, this is the activation energy, EA. Not from the bottom. From the bottom till the peak, that is the threshold energy. That is the complete energy for this reaction. But the activation energy to activate the reactants, that is the kinetic energy. Because we know that reactant have some amount of kinetic energy. So they need just activation energy, this amount of energy to react. For example, you are taking in a container the milk, the tea, the sugar, water to make a tea. You are putting all the things in a container and you are not giving a heat to your materials, to your all the components. Then you cannot make the tea. You need to provide the energy. That energy is basically the activation energy to make a tea. In the same way, you having a reactants, they having a kinetic energy, but they need an activation energy to collide effectively to make a product. Getting my point? चाय बनाने के लिए भी आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। आपने के पास सारे कंपोनेंट्स हैं, आपने उन्हें मिक्स कर दिया, जब तक आप उसे हीट नहीं देंगे आपकी चाय नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट्स को एक स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होंगे। सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी। समटाइम्स ये एक्टिवेशन एनर्जी स्लो कर देती है रिएक्शन को, उसके लिए फिर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को कोलाइड करवाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेट्स सी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। Okay, as we know, in exothermic reaction heat is released from the system, and in endothermic reaction we provide heat to the system. Here this is the example of exothermic. In exothermic reaction, this is a reactant. Reactants reach the peak, the activated complex will form, and that activated complex will convert into a product. When product is formed, here you can see the energy of the product is very less. This ordinate is for potential energy and this ordinate is for reaction coordinate, the progress of the reaction. So here you can see the energy is less than the reactant. This is the reactant's energy and this one is the product's energy. So in an exothermic reaction, the energy of the product is less than the energy of the reactant. For example, you are giving, initially you are providing this reaction a 50 kilojoules energy. The product have released, for example, 60 kilojoules of energy. This means that products are increasing more energy that you are providing to proceed the reaction. 50 kilojoule is less energy as compared to the 60 kilojoules. So आप जो एनर्जी रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स जो एनर्जी रिलीज कर रहा है प्रोडक्ट, वही एनर्जी सिस्टम में दोबारा से यूज हो जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए। सिस्टम के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ही प्रोडक्ट्स की एनर्जी को यूज करके रिएक्शन प्रोसीड करते रहेंगे।
दैट इज वाई हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोवाइड नहीं करते, ऐसी कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करते जो एनर्जी को इंक्रीज करे, बिकॉज उनके अपने प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिलीज करके खुद ब खुद रिएक्शन को परफॉर्म करवाते रहते हैं. बट अपोजिट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, reactant having less energy, and here you can see the product having a high energy. This is the energy of product and this is the energy of reactant. एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है. इसका मतलब है अगर आपने इनिशियली 50 किलो जूल्स की एनर्जी दी तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम है, कम रिलीज हुई है. फॉर एग्जांपल 10 किलो जूल्स, 40 अभी भी है, 40 किलो जूल्स है फॉर एग्जांपल, तो दैट मीन्स आपको इस रिएक्शन कराने के लिए फिर से 10 किलो जूल, 40 तो ये यूज हो जाएगी, लेकिन 10 आपको फिर से देनी पड़ेगी. ओह सॉरी, नॉट 10, आपको 40 फिर से देनी पड़ेगी. 10 रिलीज हो रही है, 10 सिस्टम यहाँ से ले लेगा और 40 आपको देनी पड़ेगी, तब मिलके फिर से 50 किलो जूल एनर्जी होगी और रिएक्शन प्रोसीड होगा. सो दैट मीन्स इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन देयर इज अ डिफरेंस of the energy as compared to the exothermic reaction. Exothermic reaction में आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है. So that means the activation energy in exothermic reaction is more as compared to the endothermic reaction. जो endothermic reaction में activated complex बन रहा है वो फॉरन क्विकली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही. बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हम रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रीवियसली 3 लेसन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ही बात करें. सो लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस. There are many methods to calculate or to find out the order of the reaction, as the method of hit and trial. अब एक्सपेरिमेंट करें, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, एरर आएगा दोबारा से ट्राई करें, फिर एरर आएगा तो बार बार आप ट्राई करते रहें. तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं. ग्राफ्स के जरिए भी कर सकते हैं. आप रिएक्शन करते रहें, डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करें. डिफरेंशियल मेथड के जरिए चेक कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड के जरिए और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस. 5 different methods हैं. By the help of these method you can find out the order of the reaction, but we will discuss just 2 methods, half life method and the method of axis reaction, that is given, these 2 are given in your book. So let's start with the half life method. Okay, half life is basically the conversion of reactant into product, half of the conversion of the reactant into product. When half of the product reactant is converted into product, that is the half life of the reaction. So by the help of this statement we can calculate the order of the reaction. This was the equation when we were discussing the half life method. T half is representing the half life, N is representing the order of the reaction, is basically inversely proportional. Half life is inversely proportional to the concentration, to the initial concentration, raised to the power 1 less than order of the reaction, 1 less than order of the reaction. N is representing the order of the reaction, so N minus 1. So the half-life of the reactants is inversely proportional. Reaction is inversely proportional to the concentration of reactant raised to the power less than 1 to order of the reaction. N is representing order of reaction, N minus 1. For example, you are doing the same reaction with a different concentration. A1 initial concentration. For example, when first you are taking 2 moles per dm³. A2 when you are taking 4 moles per dm³. So you are changing the concentration. When you are changing the concentration, according to the change of the concentration, half-life period will change. So T1 for when you are taking initial concentration A1 and T2
when you are taking initial concentration A2. इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने ली A1, उसके लिए जो हाफ लाइफ थी वो थी T1. जब आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन चेंज की, उससे A2 लिया, कोई भी अमाउंट हो सकती है, उसके लिए जो टाइम था, जो हाफ लाइफ पीरियड था, दैट इज T2. So here you can see T1 1 over initial concentration A1 n minus 1. T2 second time, the second half life when you are taking initial concentration A2. So T2 inversely proportional 1 over A2 n minus 1. ये आपने दो different concentrations के लिए equation लिख ली. Half life की equation when you are taking two different concentration. A1 for example you are taking 2 moles and A2 for example you are taking 4 moles. So the half life will be changed for both of the reactions. So T1 when you are taking initial concentration A1, T2 when you are taking initial concentration as A2. Divide equation 2 with equation 1 here. Okay. T1 is equals to 1 over A n minus 1. Dividing this equation with the T2. T2 divide 1 over A, this is A1 or this is A2, n minus 2. So this is in a division, we can rearrange this. This is also in a division under the division. So take it on the upper side and this will move on the lower side. Here you can see this. Like T1 over T2 is equals to A2 n minus 1 divided by A1 n minus 2. So T1 के सामने आ जाएगा A2 n minus 1 and T2 के सामने आ जाएगा A1 n minus 1. Because ये डिवीजन में थे तो पोजीशंस हमने चेंज कर दी. ये नीचे डिवीजन में था तो ऊपर की तरफ मूव हो गया और ये डिवीजन में आ गया 1 over like this. जी दोनों की पावर n minus 1 है तो हम इसे कंबाइन कर देते हैं. So T1 over T2 is equals to A2 over A1. बोथ दोनों की पावर हम एक साथ ही लिख लेते हैं n minus 1. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जी मिस. ओके. अब दोनों के ऊपर हमने सेम कर दी, पावर एक साथ लिख दी n minus 1. Now take log on both sides. मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो और ज्यादा क्लियर होगा. सो log ले रहे हैं हम दोनों साइड पर, log इस साइड पर भी log ले रहे हैं और इस साइड पर भी log रहे हैं. तो जब हम log लेते हैं तो जो भी पावर होती है वो साइड पर आ जाती है. तो ये लुक एट हियर, यहाँ हमने log लिया तो ये जो पावर है ये बाहर आ गई लाइक दिस हियर. सो log T1 over T2 is equals to n minus 1. ये जो पावर थी इन दोनों कंसेंट्रेशंस की, log A2 over A1. यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नो. ओके. आगे चलते हैं. अब हमने log अप्लाई कर दिया है एंड नाउ पावर इज सेपरेट आउट. जो n minus 1 पावर थी वो बाहर आ गई. लुक एट हियर व्हाट हैपेंस हियर. जो हमने पावर बाहर की और जो अरेंजमेंट की लाइक T1 over T2 log था, इस साइड पर हमारे पास था n minus 1 log A2 over A1. ये n minus 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, सो हम इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए. नाउ इट विल बी ना डिवीजन, तो ये डिवीजन में आ जाएगा log A2 A1. तो log हम एक दफा ले सकते हैं, वैसे भी यहाँ ऐसे लिख दीजिए. ओके. तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो n minus 1 is equals to log T1 over T2 log A2 over A1. 1 माइनस के साथ है, इसे भी इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ. सो 1 प्लस log T1 over T2 डिवाइडेड बाय log A2 over A1. तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई यहाँ पर. log T1 over T2
8 log A2 over A1, जो n-1 था वो 1 भी मूव हो गया, वो प्लस के साथ आ गया, तो 1 plus log T1 over T2 A2 over A1. By this formula you can calculate the order of the reaction. So एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक की, एग्जांपल नंबर 2. Look at this example. It's very easy. आपको सारा data given है, just you have to put the values. Okay, look at here. In the thermal decomposition of N2O at 76 degrees Celsius, the time required to decompose half of the reactant was 255 seconds. यानी कि T1 आपको दे रहे हैं कि 255 seconds है. Okay. Initial pressure, concentration की जगह pressure use हो रहा है, so you can just take it. Because if there are gases, so आप pressure की बात करते हैं. So A1 is equals to 290 mmHg. तो ये आपका A1 हो गया. So, and 212 seconds are the initial at the initial pressure of 360 mm. ठीक है, अब आपको एक T2 दे दिया है, second temperature that is T2, 212 सेकेंड, और उसके लिए आपको A2 यानी कि कंसंट्रेशन जो दे रहे हैं वो प्रेशर दे रहे हैं, बेसिकली दैट इज 360 mm, बिकॉज गैसेज हैं, जब गैसेज होती हैं तो हम प्रेशर ले सकते हैं जी. तो यही आपकी वैल्यूज आ गई हैं, A1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, A2 और T2 सारी वैल्यूज गिवन है आपको क्वेश्चन में. फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log A2 ओवर A1. तो T1 की जगह T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, T2 की जगह T2 की वैल्यू दिस वन पुट कर दीजिए, log A2 ओवर A1, A2 सेकेंड यानी कि आपकी जो सेकेंड कंसंट्रेशन है, जो A2 कंसंट्रेशन है, आपने अब ऊपर वो लिखनी है, तो 360 mmHg ऊपर आ जाएगा और 290 mmHg आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. फर्स्ट डिवाइड T1 विद द T2, देन टेक अ लॉग. आपने पहले T1 को T2 के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद इसका लॉग लेना है और वैल्यू लिख देनी है ऊपर जो भी आपकी आई हेयर. उसके बाद आपने 360 को A2 को सॉरी हाँ यस A2 को पहले A1 से डिवाइड करना है, पहले डिवाइड किया दोनों को, हेयर 360 डिवाइड विद 290, देन टेक लॉग, फिर आप उसका लॉग ले लीजिए, तो आपकी आ जाएगी वैल्यू 0.0940. उसके बाद इन्हें डिवाइड कीजिए और 1 प्लस 0.85, योर आंसर विल बी 2. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्या ऑर्डर है, 2. मिस ये तो 1.85 लिखा है, यस, तो यू कैन कंसीडर इट अप्रोक्सीमेटली. 1.8 अगर ये राउंड ऑफ कर देंगे तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. क्लियर है सबको? जी मैं इट्स वेरी इजी. अच्छा, आपकी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन, दैट इज सेम, बिल्कुल सेम है, इसी प्रोसीजर पे होना है. आप अपनी बुक्स खोलें और उस पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 देखें अपनी बुक का, जी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इसे आपने करना है और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा पिक्चर के, मिस हमने कर लिया और हमें समझ आ गया. लुक एट द क्वेश्चन. In the reaction of nitrogen monoxide and hydrogen gas, it was observed that equivalent mixture of gases at 340.5 mm of Hg. अच्छा, आपको A1 दे दिया है, ठीक है, 340.5 mm of Hg. ओके, और आपको टाइम चेंज दे दिया है 102, T1 दे दिया है 102 सेकेंड. उसके बाद कह रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, तब इनिशियल कंसंट्रेशन ली गई 288, तो A2 हो गया 288 mm of Hg, ठीक है. was half completed in 140 सेकेंड, तो हाफ कंप्लीट होने का मतलब है कि आपको हाफ लाइफ दी है, तो T2 is 140 second. So A1 is given, T1 is also given, A2 given and T2. All the values are given. Formula आपको पता है, n is equals to 1 plus log T1 over T2 divided by log A2 over A1. All the values are given. आप उनमें वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. आंसर कुछ आएगा 2.88. आपने ये ट्राई करना है और मुझे सॉल्यूशन सेंड करना है. 2.88 दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर.